So welcome to my video exploring classes. This is method is Newton's backward interpolation formula. Here this is the chapter interpolation. Here it is a very important topic, that is Newton backward interpolation formula. In the previous video we have discussed about the Newton's forward interpolation formula. In this video deals with what Newton's backward interpolation formula. So what is the Newton backward interpolation formula? The interpolation based on the root of end-on position to the initial position. So you will get here, these are the roots xn and y0 dotted to yn. These are what tabular values. x0 to x0, x1, x2 dotted to xn. These are the roots, and y0, y1, y2. These are the what tabular values. आमर कौन कराइतला प्ले इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू इन दिस डायरेक्शन, बट बैकवर्ड टा कोन होची एंड ऑन पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन एपोर्ट रे डायरेक्शन नो कैलकुलेशन करा. सो दिस इज द बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. सो हियर इज द डेरिवेशन. लेट अ फंक्शन y इक्वल टू f of x हैविंग ए रूट. गोटे फंक्शन टा दिया है y इक्वल टू f of x जार रूट गुडा को x0, x1, x2, xn बंदे जोटा दिया है आ कंडीशन होची xn इक्वल टू x0 प्लस nh. अर्थ होची h बड़ी बड़ी जाउथो, इंटरवल सेम थिबो, h इज द इंटरवल, x0 प्लस nh रो अर्थ होची यार इक्वल इंटरवल थिबो. आ टेबुलर वैल्यूज गुडा को रिप्रेजेंट करा होची y0, y1, y2 डॉट 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 yn. न्यूटन कौन करथिले बैकवर्ड फार्मूला रे अकॉर्डिंग टू न्यूटन द बैकवर्ड लॉ ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय. से कौन करथिले बैकवर्ड लॉ अनुसार रिप्रेजेंट करथिले ए टाइप y इक्वल टू f of x. से लिखिथिले केते गुडे ए जो रूट गुडा को नेकी को रूट गुडा x0, x1, x2, xn बंदे रूट गुडा ए टाइप रे नेथिले. बैकवर्ड टू स्टार्ट कराय देला, इक्वल टू स्टार्ट कराय देला केमति a0 प्लस हमर फॉरवर्ड रे कौन थिला प्ले x x0 थिला, बट हियर x x1 into a1. Here x minus x1, then the next root is x minus xn minus 1 a2. Then the third root is not written, but if you want to write the third root, then call x minus xn into x minus xn minus 1 into x minus xn minus 2 into a3. Then the dot 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 the final x minus xn minus 1. In this way, on decreasing, you will get x minus x0. A type रो कमी कमी आसीबो. a नौजी तार a0, a1, a2 एगुडा को कोन गुडा के एगुडा सब जा गुडा कांस्टेंट गुडा. ए कांस्टेंट गुडा के जेतला बाहर कर दबा, का द्वारा बाहर कर दबा, ए जो टेबुलर मूल्य गुडा दिया हिची y0, y1, y एगुडा को सब जा को व्यवहार करके a0, a1, a2 एगुडा को हमें रिप्लेस कर दबा. रिप्लेस कला परे the one of the formula that we will get is interpolation polynomial formula. Backward interpolation polynomial formula हम गोटे आसीबो, equation 2 आसीबो. So let us start equation 2. So come to when x equal to xn, हमरो फॉरवर्ड रे कौन कराइतला बले x equal to x0 टू स्टार्ट कराइतला, y equal to y0 टू स्टार्ट कराइतला, बट एठी कौन कराबो x equal to xn टू स्टार्ट कराबो. जेतବେଳେ x इक्वल टू xn पुट कराबो, जोडी जोडी x अछि, x अछि, x अछि, x अछि, जोडी जोडी x अछि, xn पुट करले y टा सेतବେଳେ कोन कराबो, y टा को yn वैल्यू कुआ. सो yn इक्वल टू कोन आइसे, yn इक्वल टू xn इटे पुट करबा हमें x पाखरे xn पुट करले xn माइनस xn इक्वल टू 0, xn माइनस xn इक्वल टू 0, सब जा 0 इज खाली a0 रहबो. सो इट yn इक्वल टू a0. द फर्स्ट वैल्यू केम, दिस वन फर्स्ट वैल्यू केम. सेकंड वैल्यू एट x इक्वल टू xn माइनस 1, y इक्वल टू yn माइनस 1. जेतले x रो मूल्य पाखरे xn माइनस 1 पुट कराबो, xn माइनस 1 पुट कराबो, सदन y टा कोन कहबो yn माइनस 1 वैल्यू कहबो. सो कोन आइसे y टा yn माइनस 1 हैला, एटा a0 को a0 लिखा हैला, x पाखरे xn माइनस 1 माइनस xn इनटू a1. आउ सब जा 0 इजो, बिकॉज़ ये लोग यार xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 सब जगह रे कोन हो xn माइनस 1 minus xn minus 1, that is 0 0 0, all are 0. Okay, so it केते आसला प्ले. सो एति के बंदे सब जा 0 हैला, खाली एति बंदे हैला. सो yn minus 1 equal to a0 plus xn minus 1 minus xn into a1. सो एति कोन कराला, एटा लेखा हैला a0 पाखरे केते लेखा हैला प्ले a0 equal to yn
तापर xn minus 1 minus xn equal to, remember this, x1 minus x0 equal to h, x0 minus x1 equal to minus h. Similarly it कौन पिला इट रहला xn minus 1 minus xn equal to बड़ एटा सान, सो इट कौन आसीबो minus h आसीबो, एटा a1 आसीबो. बर्तमान कौन करी minus ha1 टा एपट नै जिबी, yn minus 1 टा एपट आन देबी. सो इट कौन आसीबो ha1 equal to yn minus 1. सो ए वैल्यू टा कौन पिले कौन दी nebula yn. This is the nebula yn, backward operator. एटा को nebula yn वेली कौन दी yn minus 1 equal to nebula yn. सो a1 equal to केता आसीबो h टा एपट आसीले nebula yn by h हला हला a1 रो मूल्य आसीला a0 रो मूल्य आसीला. आ गोटे हम फाइंड आउट कर दवा a2, तापर सिमिलरली पुट कर दवा एटा x equal to xn minus 1, y equal to yn minus 1. सेतो कोन हबो एती बंद a2 बंद रहबो आ सब जगह 0 हो जो. हले y पाखरे yn minus 2 पुट कराबो, x पाखरे xn minus 2, इट xn minus 2, इट xn minus 2, इट xn minus 2, a2 बंद रहबो सब जगह 0 हो जो सब जगह फर्दर. हले कोन रहला एटी लिखा है yn minus 2, a0 पाखरे कोन लिखा है एटी yn, तापर एटी कोन बोले xn minus 2 minus xn into a1 पाखरे मध्ये एटी पुट कर देली मूल्यटा. तापर थर्ड टा कोन लिखा है xn minus 2 minus xn minus 2 minus xn minus 1 into a2. so एटी come to here प्ले एटी कोन आसला एटा ओटा लिखा हला a1 पाखरे एटा प्ले फर्स्ट हो a0, दिस इज a0 equal to a0 equal to an given, xn minus 2 minus xn equal to minus 2h, कारण एटा डिफरेंस होची 2 माइनस एटा बडो एटा सान minus 2h into a1 पाखरे केते पुट कराबो del yn by h कैंसिल है. आईटी कोन रहला एटी minus 2h, एटा रहला minus h into a2. हेले बर्तमान देखिबा एटा को yn पुट करला, एटा कोन माइनस रे मल्टीप्लाई कर देले h कैंसिल ना minus 2 del. so del yn equal to what is the value of del yn द मूल्य एटी पिले देखो yn minus 1 ता पाखरे एटी पुट कर देले 2 minus 2 del yn पाखरे एती पुट कर देले. एटा माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर a2. हम दरकार a2 रो मूल्य एती की कोन एती रखी सबदा सेपडू नै जिवा, ए सबदा सिंपल कर देले केते रहबो yn minus 2 yn minus 1 plus y0 आसी. एटा कोन आसी एटा कोन कहती del square y0 nebula square y0. दिस इज nebula square y0. ए वैल्यूटा nebula square y0, सॉरी nebula square yn, सॉरी भूल nebula square yn. ओके ए 2h स्क्वायर एपट अछि बोले एपट को आसी डिवाइड हे जो a2 इक्वल टू कोन आसी nebula square yn by 2h स्क्वायर और nebula square yn by 2 टा कोन 2 फैक्टोरियल ला लिखा हे परबो h स्क्वायर by h स्क्वायर a3 इक्वल टू दिस वन. so हमें ए टाइप रो गले similarly you will get, so you can write similarly प्ले a2 इक्वल एती आसले a3 इक्वल केते आसे प्ले a3 इक्वल आसे nebula q yn by 3 factorial into h cube, a4 इक्वल टू nebula 4 yn by 4 factorial into h to the power 4 dot 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 dot. last term an equal to केते आसे प्ले an equal to nebula to the power n yn by n factorial into h to the power n, this one. so now get ए जो a0 a1 a2 एगुडा सब अछि ता पाखरे हम कोन कराबो जो कैलकुलेशन कराय जे a0 a1 पाखरे सेटा पुट करबा. putting the constant in equation 1 we have प्ले एटी हमरो जुड जुडी एटी लिबे दोची एटी पुट कर दो. now get we have what you have, so now get y equal to f of x equal to प्ले a0 पाखरे हम कोन पुट करिया yn, a1 पाखरे nebula yn by h, a2 पाखरे
nebula square yn by 2 factorial into h square dot 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 an equal to जो आसला nebula to the power n yn by n factorial into h to the power n. एटा होची इक्वेशन नंबर 2 आसला. So this one equation number 2. So what about your equation number 2? ये जो इक्वेशन नंबर 2 टा कोन रिप्रेजेंट करछि बोले n factorial into h to the power n. So equation 2 टा polynomial formula represent करछि. So you look at here, equation 2 represent Newton backward interpolation formula. Newton backward interpolation polynomial formula. Equation 2 represent the Newton's backward interpolation polynomial formula. So now we will discuss about the reduced formula. Formula टा केमती reduce है कि आउ गोटे formula आसीबो देखिबा. So here you look at पहले जो formula टा अछि formula number 2 को आमे टिके reduce करके आउ गोटे टाइप रे लिखिबा. ए जो x minus xn को आमे nth term माने जे कोन से गोटे term को आमे नबा. Let the nth term is x minus xn को sh पुट करबा. ए जिनसटा को sh पुट कर. पुट कले कोन आसीबो मु एटी जुडी जुडी xn minus 1 अछि सेठी sh पुट करे. तापर जदी आमे एटा को sh पुट करे x minus xn minus 1 तो केते पुट करबा. आ बदले मु कोन करबी गोटे xn minus xn कली प्लस xn कली एटा x को x लिखाला माइनस xn minus 1 को माइनस xn minus 1 लिखाला मझे गोटे माइनस xn कराला प्लस xn कराला x minus xn बदले कोन पुट कराला sh पुट कराबो आ xn रो xn minus 1 माइनस कले h रहला ए दिडे h कॉमन बाहर पड़े h * h + 1 रहला अगेन x minus xn minus 2 बदले कोन पुट कराबो सेम एटा जिंद कराला सेमती x को x xn minus 2 को xn minus 2 मझे xn गोटे माइनस कराला प्लस कराला एती गोड sh पुट कराला एती गोड 2h कारण डिफरेंस होची 2 h कॉमन बाहर गले h + 2 एमती जो जिबा सिमिलरली x minus x0 बाकू हम जिबा लास्ट टर्म टा केता आसो ता बदले कोन पुट कराबो x minus xn plus xn minus x0 x minus xn बदले sh xn minus x0 बदले nh nh so it h कॉमन बाहर कर देले s h into sn plus 1 so ए गुडा को सब जो आसिला जो मूल्य जाको सेटा इक्वेशन 2 रे नै पुट कर दबा कोन आसो रिड्यूस आसो y बगर y आ f of x लिखा हो लास्ट को yn को yn x minus xn को बदले sh del y0 by h एठी होची sh ए आ बदले s h into s plus 1 लिखा है जी आउ del square y0 और del square yn by 2 factorial into h square plus dot 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 रहला मझे लास्ट टर्म टा कोन हो x minus xn बदल रे कोन पुट कराबे sh तापर x minus xn minus 1 h into s plus 1 तापर h into s plus 2 dot 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 लास्ट टर्म टा h into s plus n आसीबो आइडी कोन अछि del to the power n yn n factorial h to the power n अछि हला एला आको आउट टिके सिंपल कर लिखि दबले आ गोटे धाडी सो कोन होबेटी जते h जाय कैंसिल हे जो प्ले h कैंसिल हे जो h कैंसिल हे जो सब जगह h कैंसिल हे जो सो कोन आसीबेटी therefore y equal to yn s del nebula yn plus s into s plus 1 nebula square yn by 2 factorial plus dot 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 last term कोन आसीबो s into s plus 1 s plus 2 dot 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 s plus n into nebula to the power n yn so by n factorial. So this is 3. So equation number 3 is the Newton backward interpolation formula. Equation 3 is the Newton's backward interpolation formula.
So this much. If you like my video, share it and subscribe it. Okay, thank you for watching and patiently.